Okay, we are ready to start. Good morning. There's only a couple of you here. Ali and Junaid, please confirm if you are able to see the screen. Yes, sir. Great. Thank you. Thank you. And thank you for showing up in the morning. All right. So last time we started talking about random processes, and I will do a very, very quick recap of what a random process is. Random process, or RP, right? In short, RP is a indexed collection of random variables. Okay. So you perform an experiment. And you get some sample space, and the sample space will have some outcomes, and you map these outcomes onto some indexed functions, or this index is generally taken as time, could be something else, but it could be time. So in the case of random variable, each of these outcomes, this guy and this guy and this guy, this maps to numbers, real numbers पे map करते हैं. But in the case of random process, each of these outcomes maps to a function, a deterministic function, not one number, but a function of the index, which we have considered as time. So ये क्या हो सकता है कि the first वाली outcome maps onto this function. The second outcome maps onto the green one. ये green है हमारे पास, and this maps into this one. Okay. And the third one, maybe it's brown, and this maps to this. Okay. So this entire thing, this ensemble is called a random process and denoted as x of t. Why we write it x of t? Because each of these guys is a function of time. One way of looking at the random process is that if I fix a time, एक जगह पे time को fix अगर कर दें, so if I fix the time to be this time, ये time मैंने fix कर दिया t1. Okay. इस time के ऊपर if I look at the random process, तो मुझे पता नहीं है कि ये वाली वैल्यू मिलेगी या ये वाली वैल्यू मिलेगी या ये वाली वैल्यू मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी आउटकम आई थी. एक्सपेरिमेंट आपने एक ही दफा किया, बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट यू जस्ट डिड इट ओनली वंस, and then you have these deterministic functions. Okay. So this green guy is a deterministic function. This brown guy is also a deterministic function. This guy is also a deterministic function. Okay. If I fix a time t1, at t1, I don't know whether I get the value on the brown curve or the green curve or the red curve. Okay. So basically at t is equal to t1, I can get one of these three numbers there. And these three numbers, I can read these three numbers along the vertical axis. Vertical axis पे इनको read करेंगे. So या ये वाली वैल्यू हो सकती है, या ये वाली हो सकती है, या ये वैल्यू हो सकती है. ठीक है. So at t is equal to t1, okay, I can get either this value or this value or this value. इन तीन में से कोई वैल्यू हो सकती है. So x of t can get one of the three values. बट ये तो रैंडम वेरिएबल होता है कि तीन आउटकम्स जो हैं वो आपको तीन वैल्यूज पे मैप कर देंगे. सो दैट मींस कि x of t1 is a random variable. कोई और टाइम ले लें, अगर कोई और टाइम ले लें, लेट्स से t2 ले लें. सो t2 के ऊपर नाउ यू अगेन हैव दीज थ्री वैल्यूज, either this value or this value or this value. Okay.
Depending upon what the outcome was, you will take one of these three values with certain probabilities. So x of t2 is another random variable, And last time we talked about the mean of the random process, mean of xt, mean of x function of time is expected value of xt. Why can I write this? Because for every t, I have a random variable, जिसकी मैं expected value calculate कर सकता हूँ, expected value calculate कर सकता हूँ, which means कि the thing that I will get here, this would be a function of time. The mean will be a function of time. It is possible that mean is constant, but in general, it will be a function of time. And then we also defined the autocorrelation and autocovariance, and I will just write it here. Expected value of x. Expected value of x t1, which is one random variable, x t2, another random variable. ये उसी तरह की चीज है, expected value of xy. दो random variable की product लें और उनकी expected value calculate करें. So this what we called as Rx t1 t2 autocorrelation function. And then we also define Cx t1 t2 as Rx t1 t2 minus Mx t1 Mx t2. ये सारी definitions हमने last time की थी. Today I'm going to do a few examples of random processes. Okay. So last time we said that you can have random processes which are either continuous time or discrete time. Continuous time or discrete time. Similarly, you can have random processes which will have continuous alphabet or discrete alphabet. The example that we just considered, ये वाली example, this has a discrete alphabet. क्यों? क्योंकि एक जगह पे हम टाइम को फिक्स कर दें तो जो रैंडम वेरिएबल आपके पास आता है वो आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ जाता है. And this is a continuous time because these functions that you have one new random variable at any time that you have. किसी भी टाइम पे देख लें एक नया रैंडम वेरिएबल आपको मिलता रहेगा. So this is a continuous time discrete alphabet example. We will see examples of, चार तरह की examples आपके पास हो सकती हैं. We will see many different examples. So I'm going to start off with some examples of discrete time random processes. So first of all, example of discrete time random process. When you have discrete time, then t is discrete. ये continuous time नहीं होगा. T is discrete. Or normally written as n. उसको n कर देते हैं वो discrete time को indicate करने के लिए. So इसका मतलब है कि n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. या ऐसे, या n is equal to 1, n is equal to 1.1, n is equal to 1.2. discrete number होगा, not continuous. Continuum of values नहीं होंगी. n जो है वो कोई discrete values लेगा. Typically n जो है वो आपके पास integer values ले लेते हैं. लेकिन it's not a restriction. So example of discrete time random process would be, so example is, let z is uniform 0 1. ये क्या चीज है? एक रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, अभी तक कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है. Define एक रैंडम प्रोसेस, define a random process x of n is equal to xn is z power n. ये
इंस्टेड ऑफ x ऑफ t मैंने यहाँ पे xn लिख दिया है, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम है तो इसलिए मैंने इसको xn लिख दिया है। एंड xn इज इक्वल टू z पावर n फॉर डिस्क्रीट n। और n डिस्क्रीट कैसे हो सकता है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या n ऐसे भी हो सकता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। What we have done here is we have defined a discrete time random process. Now, last time we also saw कि ये जो this guy red, this brown guy and this green guy, these are three sample paths of the random process. Sample path, ये deterministic function है, okay? And these are the sample paths of the random process. Okay? Let me try to draw sample paths for this random process. ये जो the one that we have just defined. Okay? Sample paths is kicking. What are some sample paths? हो सकता है सैंपल पाथ इनफाइनाइट हो सकता है फिक्स्ड हो। जैसे ऊपर वाले केस में सैंपल पाथ आपके पास सिर्फ 3 ही थे, सिर्फ 3 सैंपल पाथ थे। यहां पर आपके पास सैंपल पाथ्स जो हैं वो the outcome of the random experiment is continuous uniform 0 1। इसका मतलब है कि जो ये रैंडम वेरिएबल z एक वैल्यू लेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटरमिनिस्टिक फंक्शन होगा, बट z is taking an infinite number of values between 0 and 1. So z is taking infinite values, is taking, or more precisely, z can take an infinite number of values, which implies that the number of sample paths or sample functions or sample paths एक ही बात है, और sample paths is also infinite, which also means that this is a continuous alphabet random process. This is a continuous alphabet random process. जरा कुछ पाथ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सारे तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, इनफाइनाइट पाथ है। ठीक है, सो एक पाथ ड्रॉ करते हैं z is equal to 1/2 के लिए। z is equal to 1/2, if z is equal to 1/2 तो किस तरह का सैंपल पाथ लगेगा? See, x of n is equal to z power n. So let me just try to draw this sample path here. So n is equal to 1, 2, 3 पे ये वैलिड है। So n is equal to 1 पे क्या होगा? n is equal to 1 पे is z power 1 which is 1/2। ये मैंने यहाँ पे 1/2 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, n is equal to 2 पे क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4। इस पे क्या होगा? 3 पे 1/8। 4 पे क्या होगा? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, so this is one sample path। तो सैंपल पाथ इसमें क्या है? एक्चुअली सैंपल पाथ इसके अंदर एक्चुअली these values हैं, this value and this value and this value and this value, and these are deterministic value. If z is given to you, outcome of the experiment is given to you, you have a fixed path, you exactly know क्या इसमें कुछ probabilistic नहीं है। अगर मैंने z आपको बता दिया, there is nothing probabilistic here because we already know that it has to be z power n. If z is given to you, there is nothing random in here. बिल्कुल उसी तरह से जैसे if you know कि the outcome is red, you exactly know कि there is this deterministic function जो random process बन जाता है। ठीक है, so बिल्कुल उसी तरह से ये if z is given to you, that means you know the outcome of the experiment and then you get this kind of a sample function. So z is equal to 1/3 पे किस तरह का बनेगा? z is equal to 1/3 पे भी बना के देखते हैं। z is equal to 1/3 पे this guy will look like the following. So this would be 1/3, फिर 1/3 और 1/3 का स्क्वायर which is 1/9, फिर उसका क्यूब 1/27
and so on and so forth. N is equal to 1, 2, 3. Here you have n. Okay. This is yet another sample path. Yet another sample path. फर्ज करें आपके पास z जो है वो 1 आ जाता है, वो आ सकता है, 1 आ सकता है. So what would be the sample path for this guy? The sample path for this guy is going to be 1. 1 की power 1 is 1. 1 की power 2 is also 1. 1 की power 3 is also 1. Power 4 is also 1, and so on. 1, 2, 3, 4. Yet another sample path. Yet another sample path. ये आपके पास एक सैंपल पाथ मिल गया, और इस सैंपल पाथ के ऊपर ये रेड वाले जो सर्कल्स हैं, दिस इज योर सैंपल पाथ. दिस इज योर सैंपल पाथ. ये रेड वाले सर्कल्स जो होंगे ये आपका सैंपल पाथ है, ये आपका सैंपल पाथ है. Make sense? Now I am going to ask the question. हमने लास्ट टाइम एक चीज डिफाइन की थी. हमने कहा था कि स्टेशनरी होता है प्रोसेस. स्टेशनरी, इसकी दो कंडीशंस थी. इनफैक्ट व्हेन वी से स्टेशनरी वी एक्चुअली मीन wide sense stationary. Wide sense stationary, it had two conditions. One, mean is constant. Mean is constant. And number two, the second condition is Rx T1 T2 is a function of T1 minus T2. What that means is कि आप Rx T1 T2 calculate अगर कर रहे हो, so the what is important is the difference between T1 and T2. तो अगर आज मैंने Rx T1 T2 calculate करनी है, ठीक है, and the difference between T1 and T2 is 5 seconds, ठीक है, तो जो भी Rx T1 T2 की वैल्यू आएगी, if I calculate it tomorrow or 1 week later or 1 month later or 100 years from today, ठीक है, if the difference between T1 and T2 is that fixed 5 seconds, तो आज मैंने 5 seconds लिया, तो जो आज वैल्यू आई है वही 100 साल के बाद भी आएगी, वही एक हफ्ते के बाद भी आएगी, वही एक महीने के बाद, एक साल के बाद भी आएगी, as long as the difference between T1 and T2 remains fixed. T1 T2 आज भी हो सकते हैं, डिफरेंस अगर उनके दरमियान फिक्स्ड है, 5 सेकंड का है. अगर कल भी T1 T2 जो भी टाइम है, तो उसमें अगर डिफरेंस 5 सेकंड का है, तो यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू, व्हिच मींस कि ये स्टेशनरी रहता है, ये स्टेशनरी रहता है. नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ये जो हमने एग्जांपल ली है, ये एग्जांपल स्टेशनरी और नॉट? आंसर्स इन द चैट विंडो. स्टेशनरी is our example, is our example, ये वाली example stationary or not? Stationary or not? Answers in the chat window. Stationary or not? पांच लोग हैं, कोई तो जवाब दे दे. नहीं. So it's not a sample path which can be stationary. Sample path stationary नहीं होता, पूरा रैंडम प्रोसेस स्टेशनरी होता है. पूरे रैंडम प्रोसेस के स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि उसका मीन कांस्टेंट होना चाहिए. मीन कांस्टेंट होना चाहिए. तो मैं देखें 1 के ऊपर मैं मीन निकालूं तो क्या मीन की वैल्यू आएगी? 1 के ऊपर जो मीन की वैल्यू आएगी वो आएगी जो भी z वैल्यू ले सकता है. when n is equal to 1, when n is equal to 1, your random process xn is just equal to z. तो xn की जो मीन वैल्यू है उस वक्त n is equal to 1 पे जो मीन वैल्यू है, वो मीन वैल्यू क्या है? What is the mean value at n is equal to 1? Mean value of random process xn at n is equal to 1. What is the mean value? देखें, at n is equal to 1, at n is equal to 1, I can get this random variable. ये random variable मुझे मिलेगा. Okay, I will get this random variable.
ये वाला रैंडम वेरिएबल मुझे मिलेगा जिसकी ये 3 वैल्यूज हैं। और ये रैंडम वेरिएबल कहां से आ रहा है? दिस रैंडम वेरिएबल इज ड्रॉन फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो सी x ऑफ n इज z पावर n। z पावर n, जब n इज इक्वल टू 1 है तो xn इज सिंपली इक्वल टू z। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z? What is the expected value of z? Z is uniform between 0 and 1. What is the expected value of z? कोई हेल्प करे मेरी भाई। What is the expected value of z? Is 0.5. Is 0.5. So the mean value of the random process xn at n is equal to 1, n is equal to 1 पे xn is simply equal to z. Is simply equal to z. So this value is 1 over 2 or 0.5. What is the mean value? या मैं पता भी चल रहा है कि ये देखें, ये आपके पास 3 वैल्यूज, मैंने 3 पाथ प्लॉट किए हैं। सारे नहीं प्लॉट कर सकता मैं क्योंकि इनफाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट है। सो मीन वैल्यू ऑफ रैंडम प्रोसेस xn at n is equal to 2, n is equal to 2, ये कितनी वैल्यू है? n is equal to 2 पे xn आपके पास हो जाता है z स्क्वायर। तो वो जो भी z स्क्वायर की जो वैल्यू आती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z स्क्वायर, विच इज सर्टेनली नॉट 1 over 2, 1 over 2 नहीं आती है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मीन ही कांस्टेंट नहीं है। n is equal to 1 पे कुछ और मीन आ रहा है, n is equal to 2 पे कुछ और मीन आ रहा है। नाउ थिंक अबाउट इट कि n is equal to 1 पे जब when you look at the random process at n is equal to 1, you will get one random variable. When at n is equal to 2, you look at the random process again, you will get another random variable. पहले आपके पास जो रैंडम वेरिएबल आया वो z आ गया n is equal to 1 पे। जब n is equal to 2 पे देखा तो आपके पास रैंडम वेरिएबल z स्क्वायर आ गया। सो z स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू वो नहीं है जो z की है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये डिमिनिश हुई हुई है, ये सब चीजें छोटी छोटी हुई है। स्क्वायर किया हुआ है आपने, 1 से छोटी चीज को स्क्वायर करें वो और छोटी हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z square would be smaller than the expected value of z. Expected value of z cube would be even smaller. Expected value of z4 would be even smaller. So हर टाइम के ऊपर मुझे एक रैंडम वेरिएबल मिल रहा है। z is equal to x, n is equal to 4 पे, n is equal to 4 पे I get x is equal to xn is equal to z power 4. xn would be equal to z power 4 when n is equal to 4. So z power 4 की आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है? So that is interesting. This is not a stationary process. मीन वैल्यू आप 2 पॉइंट्स पे निकाल लें, वहीं से पता चल जाएगा स्टेशनरी नहीं। बाज दफा मीन वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन rx t1 t2 जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो नहीं सेटिस्फाई होगा तो फिर भी स्टेशनरी नहीं होगा, even if the mean value is constant. Both of these conditions are required for the process to be stationary. So I will have few more examples of discrete time random process. Some generic examples. So first example is IID, independent and identically distributed process. ये वो example है जो stationary भी होगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि if x1 x2 dot are IID random variables, then remember we are only talking about discrete time processes on, अभी हम continuous time की बात नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे, ठीक है? ओके, अगर x1 x2 x3 x4 all the way, if these are IID random variables, independent and identically distributed means इनका same PDF है या PMF है, x1 का x2 का same PDF या PMF होगा। x1 x2 जो है वो discrete भी हो सकते हैं, वो continuous भी हो सकते हैं। Process जो है वो discrete time है, process discrete time है। Then I define the process xn such that n is in capital N is an IID process, एग्जाम्पल देते हैं आपको। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? पहली एग्जाम्पल है कि xi is
Bernoulli P. Xi is Bernoulli P for every I, for all I, is Bernoulli P. So this is a random process जिसमें I की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, या n की कोई भी वैल्यू ले लेंगे. If you have n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, and so on and so forth. So at each n, what I am looking at is a random variable, and that random variable is simply a Bernoulli P. इस जगह पे भी Bernoulli P है, इस जगह पे भी Bernoulli P है, इस जगह पे भी Bernoulli P है, इस जगह पे भी Bernoulli P है. ठीक है. So और ये ऐसे Bernoulli P's हैं जो सारे इंडिपेंडेंट भी हैं. So these are all independent and identically distributed. क्या ये स्टेशनरी है? Well, let's take a look. Is this stationary? सबसे पहले मीन को चेक करते हैं मीन को. चेक मीन. n is equal to 1 पे जो मीन है, क्या n is equal to 2 पे भी वही मीन है? क्या वही n is equal to 3 पे भी मीन है? Yes, same मीन. ओके, मीन की वेरिफिकेशन हो गई, है. Is Rx T1 T2 function of T1 minus T2? Well, Rx T1 T2 की definition देख लेते हैं. It's expected value of x T1 x T2. And if you don't mind, instead of writing T1 T2, I'm going to write N1 and N2. N1 and N2. इनको N1 और N2, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम है इसलिए डिस्क्रीट टाइम लिख देते हैं. xn1 xn2. Now xn1 and xn2, these two guys और n1 n2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. n1 हो सकता है 2, n2 हो सकता है 7. n1 हो सकता है 2, n2 हो सकता है 7. n1 हो सकता है 55, n2 हो सकता है 99. Now this guy is expected value of xn1 into the expected value of xn2. Why? Because they are IID. xn1 and xn2, they are IID. And what is the expected value of xn1? What is the expected value of xn1? Bernoulli P की expected value क्या होती है? Bernoulli P की expected value क्या होती है? Bernoulli P की जो expected value होती है is P, and this guy is also P. So आपका Rx n1 n2 is P squared. Is this a function of T1 minus T2? Yes, of course. ये constant है तो ये T1 minus T2 का ही function है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P square plus 0 into T1 minus T2. So this is a function of T1 minus T2. This is a function of T1 minus T2. So this process is stationary. This process is stationary. So Muhammad Junaid Ahmed, you are saying that at some n we have to look for the values of all the paths. That is true. यहाँ हमारे पास infinite paths थे. इसमें से हमने सिर्फ 3 की एग्जांपल लिया. जाहिर है मैं infinite तो यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकता ना. हमने सिर्फ 3 paths की एग्जांपल ली. So लेकिन हमें पता है कि n is equal to 1 पे, when I look at the random process, if I fix n is equal to 1, I will get some value. वो 1/2 होगी या 1/3 होगी या 1 होगी या 0 होगी या 1/4 होगी या 1/9 होगी. Anything between 0 and 1 हो सकती है. So yes, you are right. We have to look at all the values. So now this process is IID process, is a stationary process. So this was one example कि xi Bernoulli P हो. एक और एग्जांपल आपको देते हैं IID प्रोसेस की. xi is, ये Bernoulli P जो था, by the way, Bernoulli random variable is a binary valued random variable.
या वो वैल्यू 1 लेता है या वैल्यू 0 लेता है, 1 विद प्रोबेबिलिटी p एंड 0 विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। ये हमारा बर्नौली रैंडम वेरिएबल था। नाउ I will give you another example of an IID process. It's a discrete time random process in which the alphabet is continuous. The alphabet is continuous. ये हम normal 0 1 ले लेते हैं, standard normal, standard normal. This process is also called, this process also called discrete time Gaussian noise. इसको डिस्क्रीट टाइम गॉसियन नॉइज भी कहते हैं, डिस्क्रीट टाइम गॉसियन नॉइज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एट एवरी वैल्यू ऑफ n, एट एवरी वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 1 पे देखें, n इज इक्वल टू 2 पे देखें, n इज इक्वल टू 3 पे देखें, 4 पे देखें, हर जगह पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? मुझे एक ऐसी वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी? एनीवन कैन आंसर दैट? कैन एनीवन आंसर दैट? क्या वैल्यू मिलेगी? n is equal to 1 पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? What should I expect to see? 0 or 1? No, no. xi is normal 0 1, is normal 0 1, which means it's a normal distribution, and the normal distribution can have any value. Normal distribution, recall, a normal distribution इस तरह की थी आपकी, and it can have any value from minus infinity to plus infinity. कोई वैल्यू भी ले सकती है. So at n is equal to 1, at n is equal to 1, I should expect to see any value from minus infinity to plus infinity. So ये आपके पास जो है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन एक यहाँ पे आएगी. इसी तरह 2 के ऊपर भी एक इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 के ऊपर भी इस तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 4 के ऊपर भी इस तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So that means at n is equal to 4, you can expect to see anything between minus infinity and plus infinity drawn from the normal distribution. At n is equal to 2, you should expect to see anything between minus infinity to plus infinity drawn from the normal distribution, drawn from the normal distribution. So the value of xi, the value of xi or xn can be drawn from a continuous distribution, जैसे इस केस में, or from discrete distribution, जैसा इसके केस में, बर्नौली की केस में. लेकिन टाइम जो है यहाँ पे, टाइम जो आपका इंडेक्स है यहाँ पे, वो हमेशा डिस्क्रीट है आईआईडी प्रोसेस के लिए, आईआईडी प्रोसेस के लिए. अच्छा, बाय द वे, पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करने के लिए मुझे हर टाइम के ऊपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी पड़ती है, एंड मोर इंफॉर्मेशन, उनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस भी बतानी पड़ती हैं. लेकिन ये आईआईडी है. If I just tell you कि IID है और n is equal to 3 पे ये normal 0 1 है, that means you know the entire random process. That means you know the entire random process. क्यों? क्योंकि अगर IID मैंने कह दिया है, इसका मतलब जो 3 पे है वही 2 पे होगा, वही 4 पे होगा, वही 5 पे, वही 6 पे, वही 7 पे, और सिर्फ मुझे 3 पे बताने की जरूरत थी. हर जगह पे वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. Okay. So now I'm going to talk about another example of a discrete time random process. It's called a random step process. Random step process. Random step process. Random step process क्या होता है? Z1, Z2 all the way are IID, okay, and ZI. Zi, it can take value +1 or -1 with probability 1/2, with probability 1/2. It's a binary valued random variable. Zi is a binary valued random variable, and all Zi's are IID. Okay. Then Zn is called a random step प्रोसेस. क्यों इसको कहते हैं रैंडम स्टेप प्रोसेस? कि एक स्टेप जो है, एक रैंडम स्टेप आपने लेना है, +1 ले लें पॉजिटिव या -1 ले लें नेगेटिव. एक स्टेप आपने लेना है, बस एक स्टेप.
and all the zi's are IID. So zi, एक example path इसका क्या हो सकता है, zn और zi, zn और zi. Example sample path इसका हो सकता है 1 1 -1 1 1 -1 -1. ठीक है, this is one sample path. कोई और भी बना सकते हैं सैंपल पाथ, बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं. So this is one sample path, one sample path. So this is a random step process. So I'm going to talk about now, very important, very important, is random walk process. Random walk process. Okay. Random step process is IID process. Random walk process is not an IID process. It's not an IID process. It's not an IID process. But it is an example of what we call a Markov chain. A Markov chain. We will talk about Markov chain in more detail next week or the week after that. But it is an example of a Markov chain, and I'll briefly explain what a Markov chain is. In fact, I will just explain to you what a random walk process is, and it's a specific example of a Markov chain. Markov chain थोड़ी सी और generalized. So random walk process क्या? So random walk process is consider Zn as a random step process. Random step process. ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया, ये रैंडम स्टेप प्रोसेस ये ऊपर डिफाइन कर दिया अभी, जो +1 -1, हर स्टेप के ऊपर आप या +1 जाएंगे या -1 जाएंगे. At every n either +1 or -1. Okay. Then I define xn is equal to summation I is equal to 1 to n zi. N greater than equal to 1 is a random walk process. X नॉट इसमें जो है वो हम कांस्टेंट लेते हैं, यूजुअली 0 से स्टार्ट करते हैं. इसकी एक सैंपल सीक्वेंस बनाते हैं. सैंपल सीक्वेंस या सैंपल फंक्शन. सैंपल सीक्वेंस और सैंपल फंक्शन इसकी क्या होगी, मैं वही वाली एग्जांपल ले लेता हूँ कि कॉपी पेस्ट, ये आपके zi's थे, बट दिस इज नॉट अ रैंडम वॉक प्रोसेस, दिस इज अ रैंडम स्टेप प्रोसेस. ये तो हमने अभी ऊपर देखा रैंडम स्टेप प्रोसेस था. रैंडम वॉक प्रोसेस क्या होगा, xn would be equal to, xn started with a 0. जब z1 जो है वो 1 हुआ तो ये देखें ये समेशन है, पूरी हिस्ट्री को सम कर देता है ये 1 से लेके n तक. सो x1 जो है वो 1 हो गया. ठीक है, फिर z2 जो है वो फिर से 1 हुआ. जब दोबारा से वो 1 हुआ तो उसमें पुराने वाले 1 में एक ऐड हो गया. ये देखिए ये 1 से लेके 2 तक आपने ऐड किए, सो दिस विल बिकम 2 एंड देन एक नीचे चले गए तो विल बिकम 1. सो ये रैंडम वॉक. अब आपको पता चल रहा है कि दिस इज सिमिलर टू अ गाय. वो एक जगह से 0 से स्टार्ट हुआ और हर 10 सेकंड के बाद या हर 5 सेकंड के बाद या हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, हर टाइम इंटरवल के बाद उसने या स्टेप लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, अपने लेफ्ट लेना है या राइट लेना है. हो सकता है पहली दफा राइट किया और फिर दूसरी दफा फिर राइट चला गया, फिर तीसरी दफा फिर राइट चला गया, चौथी दफा फिर लेफ्ट आ गया, पांचवी दफा फिर राइट चला गया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. यू गेट द पॉइंट. ओके, सो 1 2 1 2 3 2 1. This is one sample path for the random walk process. So I am going to find out what is the probability
that xn is equal to k. What is the probability xn is equal to k? So यूं समझ लें कि आपने स्टार्ट करना शुरू किया, तो every time at every discrete step you go to the left or go to the right, go to the left or go to the right, go to the left or go to the right. ठीक है, आपसे हम पूछ रहे हैं कि आफ्टर n steps what is the probability कि आप k steps आप राइट पे खड़े हैं, k steps राइट पे खड़े हैं. जैसे ये देखिए 3 तक चला गया था, ये 3 से आगे भी जा सकता था, 4 तक भी जा सकता था, 5 6 7 कहीं पे भी जा सकता था. What is the probability xn is equal to k? This is called the first order probability mass function of random walk process. Random walk process. फर्स्ट ऑर्डर है तो कोई सेकंड ऑर्डर भी होगा. फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर भी होगा. एंड सेकंड ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी xn is equal to k, xm is equal to l. ठीक है, एक दफा आप इधर आ गए और फिर किसी और टाइम पे किसी और जगह पे. सो लेट मी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन. इसको पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो यहां पे अब हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी xn is equal to k. सो यूं समझ लें कि आपके पास अब n, आपने n स्टेप्स लिए हैं, या लेफ्ट या राइट. सो n steps taken, each step either left or right, or either plus one or minus one, either plus one or minus one. Okay. Assume there are a plus ones. A is constant. Assume करते हैं कि a plus ones थे. तो इसका मतलब कितने माइनस वंस होंगे, आपने टोटल n स्टेप्स लिए हैं, उसमें से a प्लस वंस हैं, कितने माइनस वंस होंगे? Answers in the chat window. Of course, n minus a. This implies that n minus a minus ones. Okay. तो समेशन आप करते हैं, आपने a दफा प्लस वन गए और n माइनस a दफा माइनस वन गए. ठीक है, सो a टाइम्स प्लस वन प्लस n माइनस a टाइम्स माइनस वन. ये इतने स्टेप्स आपने लिए हैं, टोटल n स्टेप्स हैं, जिनमें से a प्लस वन है और n माइनस a माइनस वन है. जब इन सबको आप एड अप करें तो आपके पास k आ जाना चाहिए, क्योंकि हर स्टेप में आप वन ऊपर या वन नीचे जा रहे हैं. दिस शुड टर्न आउट टू बी इक्वल टू k. ये क्या होना चाहिए, सो इसको सॉल्व करें. a विल बी टर्न आउट टू बी n प्लस k डिवाइडेड बाय 2. a विल टर्न आउट टू बी n प्लस k डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब कि xn इज इक्वल टू k बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास n प्लस k बाय 2 वंस आने चाहिए, और बाकी जो है n माइनस n प्लस k बाय 2 माइनस वंस आने चाहिए. Okay, now I can write the probability xn is equal to k is equal to, now think of this as n trials हैं आपके पास, और उन n trials में से आपने a successes लेकर आनी है. So this looks like a binomial to me. n trials हैं, उसमें से n plus k by 2 successes लेकर आनी है. सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें यहां से पता चल गया था कि zi जो है प्लस वन होता है विद प्रोबेबिलिटी 1/2, माइनस वन विद प्रोबेबिलिटी 1/2. ऐसा हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटीज बराबर ना हो, बट अभी फिलहाल तो बराबर ही दी हुई है. सो 1/2 पावर n प्लस k बाय 2 और 1/2 n माइनस n प्लस k बाय 2, which is n choose n plus k by 2, 1/2 power n. And this is your first order PMF. First order PMF of the random walk process.
गैम्बलिंग के प्रोसेस को हम रैंडम वॉक से मैप कर सकते हैं। जब आप गैम्बलिंग करें तो हर गैम्बलिंग इंस्टेंट के अंदर, हर गेम के अंदर यू विल ईदर विन और यू विल ईदर लूज। अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लूजिंग इक्वल भी हो सकती है या रफली इक्वल हो सकती है। सो यू विन और लूज, विन और लूज। इंटरेस्टिंग उसकी एनालिसिस बताती है कि द प्रोबेबिलिटी दैट a gambler will eventually run out of money, the probability of that event happening is 1. So इसका मतलब है कभी गैम्बलिंग में जाए तो there is a sure shot probability that you will run out of money if you keep on playing. कभी ना कभी आप हार जाएंगे, कभी ना कभी हार जाएंगे, लेकिन कितनी देर के बाद हारेंगे? The expected time to completely run out of money. हो सकता है कि 10 गेम्स में ही हार जाए, हो सकता है 20 में हार जाए, हो सकता है यू हैव अ बिग अमाउंट ऑफ मनी और आपको ज्यादा टाइम लगे। द एक्सपेक्टेड टाइम टू रन आउट ऑफ मनी would be infinite, नो मैटर कितनी भी वैल्यू से स्टार्ट कर, नो मैटर कितनी भी वैल्यू से स्टार्ट कर। So now I'm going to talk about another very important discrete time random process. It's called a Markov process. Markov process. Not Markov chain as yet, but again, Markov process is extremely similar to the Markov chain. Again, so in fact, Markov chain की एक instance है. By the way, random walk is also a Markov process. Random walk is also a Markov process. Markov processes और भी हो सकते हैं, रैंडम वॉक के अलावा भी मार्कov प्रोसेसेस हो सकते हैं, बट रैंडम वॉक इज अ मार्कov प्रोसेस। मतलब क्या है मार्कov प्रोसेस का? मार्कov प्रोसेस का मतलब है कि given the present, past and future are independent of each other. IID में क्या होता है? IID में पास्ट और फ्यूचर अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। हमें कुछ के कहने की, प्रेजेंट देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सारे IID होते हैं। IID प्रोसेस के अंदर एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, ठीक है? सो मार्कov प्रोसेस में नॉट एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, बट इफ यू गिव द प्रेजेंट, then past and future they will be independent. Okay, so let's say you have this present and then past, यहाँ पे इवेंट्स अकर कर रहे हैं, रैंडम प्रोसेस की कोई वैल्यू आती है, ये मैंने वैल्यूज नहीं शो की हुई यहाँ पे, बट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम शो कर दी हैं, जहां पे हमारे पास रैंडम प्रोसेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? If the present is given to you, given this guy, the past and future they will be independent. IID में क्या होता था? IID में ये होता था कि everything is independent unconditionally. Present दें या ना दें हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। So इसका मतलब है कि Markov processes they are not as liberal as the IID processes. It's next best thing, yeah, next best thing to the IID processes. Now, I'm going to throw in some intuition here, and the intuition is कि जो IID process है, उसमें everything is independent of everything else. Okay? So that means if I have to do a machine learning problem, जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, वेदर का डेटा लेट्स से आपके पास अवेलेबल है, for the past 10 years. Okay, I am asking you to predict the weather tomorrow. You will not be able to make a good guess. You might as well just toss the coin. हम गैस ही नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि कल का जो वेदर है वो पिछले किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि आईआईडी प्रोसेस होना जो है वो अच्छी या बुरी बात जो है वो in the right context. It's in the right context. So if you are trying to predict the sales in your shop tomorrow, if you have the data for the past 3 months, and if the sale is following an IID process, you will not be able to make a good guess. Okay? वो तुक्का ही होगा बिल्कुल, उसमें कोई एजुकेटेड गेस नहीं होगा। उस डेटा को थ्रो कर दें तो तब भी आपके पास वही गैस है। Markov process is slightly better. Yes, slightly worse is the way of looking at it. Markov process के अंदर future value को predict करना है आपको, तो you can just throw away the past if you know the present. ठीक है, I will give you an intuitive explanation कि random walk जो है वो क्यों Markov process है। रैंडम वॉक क्यों मार्कोव प्रोसेस है? देखें, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप इस वक्त 57 स्टेप्स टू द राइट खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था, अब मुझे बताएं जो नेक्स्ट स्टेप है आपका क्या होगा। तो या तो वो 57 के राइट पे चला जाएगा या 57 के लेफ्ट पे आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि यू विल बी स्टैंडिंग एट 56 राइट और 58 राइट। 57 राइट से स्टार्ट किए तो एक और राइट जा सकते हैं या वापस थोड़ा सा लेफ्ट आ सकते हैं। So given the present state, ये जो आपके पास फ्यूचर आ गया है 58 या 56, ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता। पास्ट वैल्यूज आप छोड़ दें, भूल जाएं कि कहां से आप 57 पे पहुंचे थे। ठीक है, there is no need to worry about के 57 पे कैसे पहुंचे। So random walk in that sense is actually a Markov process. ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी mass function of x n plus 1 given all the previous guys xn minus 1 xn minus 2 dot all the way up to x naught, ये सब आपको दिए हूं। all of these are given to you if all the states are given to you। ठीक है, इसका जो probability mass function है, and of course there is some argument of that, x of n plus 1 given xn minus 1 xn minus 2 dot x naught। ठीक है, this guy here, ठीक है, the claim is कि मार्कोव प्रोसेस में आपको अगर प्रेजेंट पता हो तो फ्यूचर और पास्ट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। what that means is कि अगर आपको ये xn इन भाई साहब का पता है, if this guy is given to you, then xn plus 1 is independent of the past। तो xn को अगर प्रेजेंट ले लें तो this is your future and everything else is past। So Markov process का जो mathematical claim है वो ये है कि this is probability of xn plus 1 given xn plus 1 given xn। बाकियों को भूल जाए, पास्ट को भूल जाए। xn अगर आपको दिया हुआ है, आपको पता चल गया कि रैंडम वॉक में 57 स्टेप्स राइट पे आप खड़े हैं, नाउ यू कैन ओनली गो वन लेफ्ट और वन राइट। ठीक है, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट कि वो 57 तक कैसे ऊंच नीच करके कैसे पहुंचा था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल IID processes are Markov, and the proof is trivial। आप प्रेजेंट दे दें, पास्ट एंड फ्यूचर इंडिपेंडेंट होंगे। हो तो प्रेजेंट ना भी देते तो तब भी इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इट्स IID। So IID processes are Markov, trivially Markov। And then the claim is
random walk is Markov. Random walk is not IID. Is not IID. It's definitely not IID. But random walk is Markov. There is a little proof for that. Random walk is Markov. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि probability of xn plus 1 takes a value small xn plus 1 given that xn is equal to xn minus 1 is equal to xn minus 1 comma dot 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 up to x naught is equal to small x naught. This probability I am claiming that this probability will be equal to ये आपकी this will be equal to the claim is कि random walk process this is equal to probability xn plus 1 is equal to xn plus 1 given xn is equal to xn, and you can forget about the past. Now the question is this equal to this? क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूं? अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो मैं प्रूव कर दूंगा कि this guy is actually a Markov process. रैंडम वॉक के लिए मैंने शो करना है. For random walk हमने क्या डिफाइन किया था? xn was equal to summation I is equal to 1 to n zi, where zi's are IID plus 1 or minus 1. zi's were IIDs plus 1 or minus 1. ऐसे हमने random walk को define किया था. ठीक है? Which means I can write that xn plus 1 is equal to xn plus zn plus 1. This is also random walk. ये random walk से ही आ रहा है. ये random walk से ही आ रहा है. So that means I can write xn plus 1 to be equal to xn plus zn plus 1. तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं. So this guy then is equal to probability xn plus 1 की जगह मैंने लिख दिया xn plus zn plus 1 is equal to xn plus 1 given xn is equal to xn, x minus 1 is equal to xn, is equal to small xn minus 1, comma dot dot dot, x naught is equal to small x naught. Now, if you are given xn is equal to xn, if you are given this, then this guy xn is just constant. It's just constant. ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे PMF of, ये भी PMF है by the way, PMF of x plus y given x plus y given x, इसमें अगर x आपको given है तो इस x को मैं constant ले लेता हूँ. This is just equal to PMF of some constant x plus y. All right. Going to erase this here. जगह बना लेते हैं. So now if xn is given to you, so this guy is constant. तो constant जो है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. तो ये I can just throw these away. लेकिन hang on, ऐसे नहीं हम थ्रो कर सकते. ये एक zn भी पड़ा हुआ है यहाँ पे. But zn plus 1, is this dependent upon any of these guys? Upon any of these guys. zn plus 1 is the new z. ये तो एक नया 56 स्टेप पहले हो चुके थे, उसके बाद ये 57 स्टेप है. किसी पुराने पे डिपेंड थोड़ी करता है. क्यों? क्योंकि zn तो वैसे ही IID. So that means
this guy does not depend on any of these guys, and this guy only depends upon this guy, only depends on, तो उसको रख लेते हैं, बाकी सबको ड्रॉप करते हैं. So this would be equal to xn plus zn plus 1 is equal to xn plus 1 given xn is equal to xn. अभी proof नहीं हुआ complete. Okay. Now this guy is equal to the probability xn plus 1 is equal to xn plus 1 given xn is equal to xn. And this is the same equation as this. तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये इक्वल है वाकई इसके. So that means कि random walk जहाँ पे xn takes a specific format, a specific form, उसके केस में मार्कॉफ प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी. नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि ये प्रोबेबिलिटी मालूम भी तो करनी थी, ये प्रोबेबिलिटी मालूम भी तो करनी थी कि दिस प्रोबेबिलिटी xn plus zn plus 1 is equal to xn plus 1 given xn is equal to xn. This is simply equal to the probability zn plus 1. Well, given xn, this xn is just constant. It's just constant. Given xn is equal to small xn, this guy is just constant. So this would be equal to zn plus 1. Oops. ये इसको मैं xn ही लिख देता हूं क्योंकि मुझे गिवन है कि xn इज इक्वल टू स्मॉल xn है, सो स्मॉल xn लिख देते हैं इसकी जगह पे, प्लस zn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस 1. और अब गिवन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो चीज यहाँ ये गिवन में है, ये zn प्लस 1 की सेहत पे तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल उससे इंडिपेंडेंट चीज है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी zn plus 1 is equal to xn plus 1 minus xn. xn plus 1 minus xn. ये ऐसे probability calculate कर सकते हैं. Now I'm going to talk about yet another example. ये example थी Markov process. पहले हमने जो है उससे पहले random walk process किया, उससे पहले IID process किया. IID random step के साथ random walk process किया, फिर Markov process किया. Now I am going to talk about another discrete time random process. And this discrete time random process is called independent increment process. By the way, यहाँ पे ऊपर हमें ये एक चीज पता चली थी कि random walk process जो है वो random walk processes जो है वो Markov का सबसेट है. Random walk processes Markov होते हैं. Vice versa is not true. Vice versa is not true. By the way, IID processes are also Markov processes, लेकिन वो random walk IID नहीं है और IID random walk नहीं हो सकते. So IID processes यहाँ पे होंगे. IID processes यहाँ पे. So this is the sort of Venn diagram which shows you कि IID processes जो है वो भी Markov processes का सबसेट. Now I'm going to talk about the independent increment process. What is an independent increment process? The independent increment process is in which the increments from one discrete time to another discrete time, the increment value, the increments are independent of each other. The increments are independent of each other. Draw करके देखते हैं. ठीक है. So let's say you have n here. So n is equal to 0, then n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, 4, and so on and so forth. So सबसे पहले 0 के ऊपर let's say कि assume करते हैं कि आपके पास वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है. 1 पे आपके पास वैल्यू let's say कि ये वैल्यू हो जाती है. So this jump here, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये जो जंप आपका लगा है, this jump, this is an increment, this is an increment, this is an increment. So 2 के ऊपर आपके पास वैल्यू जो है let's say इधर चली जाती है, 2 के ऊपर वैल्यू इधर चली जाती है, 1 के ऊपर इधर थी, 2 के ऊपर इधर चली गई. So the increment now
is this. The increment is this. ये यहाँ पे, ये आपके पास इंक्रीमेंट, ठीक है। और लेट्स से कि 3 के ऊपर जो है वो वैल्यू वापस यहाँ पे आती है, ठीक है। सो नाउ द इंक्रीमेंट इज दिस वैल्यू, इज दिस वैल्यू। 4 पे लेट्स से कि यहाँ नेगेटिव में चली जाती है वैल्यू, 4 पे नेगेटिव में चली जाती है। व्हाट इज द इंक्रीमेंट नाउ? द इंक्रीमेंट इज दिस, the increment is this. This is your increment. If these increments are independent, then we have what we call the independent increment process. Independent increment process. By the way, random walk is also independent increment. Random walk has independent increments. So, definition, mathematical definition. Math इसका करते हैं. A random process has independent increments, okay, when has independent increments when or if x n1 कोई भी नंबर होगा यहां से 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कॉमा x n2 minus x n1, the value of the random process at n1, the value of the random process at n2 minus the value at, ये आपका इंक्रीमेंट आया है। और ये पहले वाला जो है ना, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट जो है वो 0 से ही ले लिया, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि ये 0, फिर x n3 minus x n2, by the way, xn1 is a random variable, xn2 is a random variable, xn1 is a random variable, subtraction of 2 random variables is another random variable, are all independent, comma so on, random variables for all sequences of indices. Index की जो वैल्यू है for all sequence of indices n1 less than n2 less than n3 less than n4, ये अगर आपके पास अगर है तो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है। ऐसे नहीं कर सकते कि n3 माइनस n1 को ले लिया और n4 माइनस n2 को ले लिया, नहीं, वो इंक्रीमेंट जो है वो हम ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि x4 माइनस x2 और x3 माइनस x1 ये ले लिया, नहीं, इनको कंपेयर नहीं करेंगे, इनको नहीं कंपेयर कर सकते। नॉट रिक्वायर्ड, इनकी जो इंडिपेंडेंस जो है वो नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज x7 माइनस x5 और x4 minus x1. This guy and this guy, they have to be independent. Required to be independent. Required to be independent. Okay. Now, there is a little proof that independent increment process are Markov processes. The proof is very similar to जैसे हमने शो किया था कि जैसे रैंडम वॉक जो है वो मार्कov होती है, जिस तरह रैंडम वॉक मार्कov होती है, उसी तरह से इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट प्रोसेस जो होता है वो भी मार्कov होता है। लेकिन अब हम वो अज्यूम नहीं कर सकते, जैसे रैंडम वॉक में तो हमने कह दिया था कि xn plus 1 is equal to xn plus zn minus 1. This is because it was random walk. लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट में तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट में हम ये जरूर कह सकते हैं
कि these guys and these guys are independent या these guys and these guys are independent, ये जरूर कह सकते हैं. So there's a little proof which is given in the notes that we have already uploaded on the LMS. Okay. Independent increment implies Markov. Random walk implies independent increments. So that means कि एक जगह पे आपकी random walk है, उसके अंदर ये आपके independent increment processes हैं, and then उसका कोई superset आपका जो ना ये Markov है. By the way, IID जो है वो यहाँ कहीं पड़ा होगा. You also have IID here. Okay. Now I'm going to talk about the distributions of random walk. हमने पहले ही देखी है first order distribution. First order distribution हमने पहले देखी है. First order distribution. And the first order distribution was probability xn is equal to k is equal to कि n plus k by 2 आपके पास जो है वो wins होने चाहिए is n choose n plus k by 2 1 over 2 power n. This we have shown earlier. ये अभी हमने पहले शो किया. Higher order distribution कैसे निकालेंगे? ठीक है. Higher order distributions. इसी एग्जांपल से शो करते हैं. that x naught is equal to 0 and xn is random walk. Okay. Find the probability that x5 is equal to 3, x10 is equal to 8, and x21 is equal to 15. देखें, x5 is equal to 3 जाने के लिए जरूरी है आपके पास कि 4 सक्सेसेस आई हो और एक फेलियर आया हो, 4 + 1 हो और 1 - 1 हो, 4 + 1 हो और 1 - 1 हो. ये तो हमें पता चल गया. फिर उसके बाद x10 is equal to 8 के लिए क्या होना चाहिए, x21 is equal to 15 के लिए क्या होना चाहिए. By the way, this guy, these are not independent. तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये 3 प्रोबेबिलिटियां अलग कर दें और आंसर निकाल दें. ना, not independent. These guys are not independent. ये कोई IID थोड़ी है. This is a random walk process. It's not independent. These events are not independent. हाँ, कोई ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे. तो ट्रिक ऐसे लगाते हैं कि हम let's make these independent by using increments. Let's make these independent increments. कैसे बनाएंगे वो? This probability is equal to the probability x5 is equal to 3, comma. ऐसे लिख सकते हैं इसको कि x10 minus x5 is equal to 8 minus 3, which is 5, and x21 minus x10 is equal to 15 minus 8, which is 7. ऐसे लिख दिया. This probability here and this probability here, there is no difference. हमने कुछ चेंज ही नहीं किया इसके अंदर, कुछ चेंज नहीं किया. बट एक फर्क पड़ गया. फर्क ये पड़ा कि अब आपके पास ये और ये और ये इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स है, नॉन ओवरलैपिंग है. ये 21 और 10 के बीच का डिफरेंस है, ये 10 और 5 के बीच का डिफरेंस है, ये 5 और 0 के बीच का डिफरेंस है. सो दीज आर नॉन ओवरलैपिंग एंड वो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है.
ये n1 is less than n2 is less than n3 is less than n4 and so on and so forth. तो इसलिए ये independent increment. Since these are independent increments, I can separate the terms out. x5 is equal to 3, probability x10 minus x5 is equal to 5, probability x21 minus x10 is equal to 7. Let's try to find out कि ये तीनों क्या चीजें हैं. ठीक है. सबसे पहले probability x5 is equal to 3. x5 is equal to 3. So n is 5, k is equal to 3. So this is equal to 5 choose. 5 choose. 5 plus 3, 8 over 2 is 4. 5 choose 4. 1 over 2 power n, which is 1 over 2 power 5. That's it. ये आपके पास आ जाएगी 5 over 32. Second, let's try to find out the probability x10 minus x5 is equal to 5. ये कैसे मालूम करेंगे? Well, हमें ये पता नहीं कैसे मालूम करेंगे. हमें we need the joint distribution of x5 and x10. अगर ये तो continuous random variable होते तो मुझे डबल इंटेग्रल करना पड़ता है एक ऐसे रीजन के ऊपर जहां पे x10 minus x5 is equal to 5 होता. ठीक है. और if these are discrete random variables, so I need the joint distribution, और joint distribution को मैं sum up करूंगा किस रीजन के ऊपर? वहीं पे जहां पे x10 minus x5 is equal to 5 है. लेकिन many random processes follow. What if this guy is a stationary random process? जो हम अलग से prove कर सकते हैं. We can use the what we call a stationary increment property. Stationary increment property. By and large, ये हम stationary random processes के लिए हम stationary increment property इस्तेमाल कर सकते हैं. Stationary increment का क्या मतलब है कि distribution of x10 minus x5 जो दो random variables हैं is the same as the distribution of x10 minus 5, which is one random variable, which is simply x5. So I can write this as probability of x5 is equal to 5. और ये हम मालूम कर सकते हैं. So n is equal to 5, k is equal to 5. सारी की सारी आपकी सक्सेसेस ही होने चाहिए. So 5, choose n plus 5, 5 plus 5, 10 over 2 is 5, and then 1 over 2 power 5. So this is 1 over 32. Similarly, number 3, probability x21 minus x10 is equal to 7. This can be written as the probability x21 minus 10, which is 11, is equal to 7. So this again would be equal to 11 plus 7, 18 divided by 2 is 9. So out of 11, I need 9 successes. So 1 over 2 power 11. So ये तीनों चीजें हमें पता चल गई. ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे and we will get the desired answer. We will get the desired answer. So next time we will talk about the mean and autocorrelation function of some example random processes. So random walk का हम mean autocorrelation function find out करेंगे. It's given in the notes. Please take a look at the notes. उसके अंदर हमने ये काफी information दी हुई है. कुछ examples भी हैं और working. So just see if you can find time to take a look at that. And we will cover this in the next lecture, definitely. So I'm going to stop here and close the session until there are any questions. Unless there are any questions, quick questions, so please feel free to ask. I would stop the share otherwise. Quick questions,
No questions. So I will stop the share, close the session, and upload the video as soon as it is available. Thank you very much. Thank you for showing up in the morning.